हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Hello children, myself Shikha Roy and today I am going to take in English grammar about teach you the sentences. Now what is sentences? Sentences is a group of words which makes a complete sense. And sense means what? Complete meaning. And it always starts with capital letter and ends with full stop or exclamation mark or question mark. Now I will give you some examples. The examples are, here I am writing example, going, school, to, I, am. Now these words are what? They are jumble words. There is no meaning in this. Now I will write it correctly. Then also you just see. I am going to school. Here also see, is this sentence right? No, this sentence is also not right. Now I will write the correct sentence. Why it is not right? Now just see, I am going to school. Now this sentence is right. Why it is right? Because I have started with capital letter and I have ended with full stop. So this is right sentence. So now about sentence I have told that it starts with capital letter and ends with full stop. So this is my about sentence. Now I will tell you another sentence. Another example I am giving. She is reading her book. Is this sentence right? Yes. Why it is right? Because here in she I have put capital letter S and after book I have put full stop. So this is right. Now she is reading her book. Now I'll tell you about kinds of these sentences. So about the kinds. Do you know the kinds of sentences? आपको मालूम है कितने kinds हैं? 4 kinds है. There are 4 kinds of sentences. My next topic is about sentences. How many kinds are there? कितने kinds है? कितने प्रकार के हैं? There are 4 kinds of sentences. पहला आएगा आपका assertive या declarative. मतलब हम जो assertive और my first point is assertive. Assertive और declarative. हाँ, इसमें क्या होता है? हम किसी को डिक्लेयर करते हैं, like I am going to school. मैं स्कूल जा रही हूँ. तो मैंने डिक्लेयर किया, मैंने कोई भी मेरे फ्रेंड होए कि किसी को भी होए, रोहित इज ए गुड बॉय. तो मैंने क्या डिक्लेयर किया? रोहित इज ए गुड बॉय. रोहित अच्छा लड़का है. तो ये चीज मैंने डिक्लेयर किया. इज ए गुड बॉय. रोहित इज ए गुड बॉय. ये मैंने डिक्लेयर कर दिया. तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव. नाउ नेक्स्ट इज
My next is interrogative. Interrogative. Interrogative means what? There will be a question mark. There will be a question mark. मतलब एंड का उसका क्वेश्चन मार्क आएगा. जैसे आएगा what are you doing? तो what are you doing उसके बाद क्या करने का है? क्वेश्चन मार्क लगाने का है. एग्जाम्पल मैंने इधर दे रही हूं. What are you doing? तो अभी इसमें क्या हुआ? इसमें लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क. व्हाट है? इधर क्या है? व्हाट. तो व्हाट है तो उसका मतलब है क्वेश्चन मार्क लास्ट में. फिर आएगा हाउ आर यू. तो हाउ भी क्वेश्चन मार्क के ही आता है. तो इसी तरह से इसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस. माय नेक्स्ट इज assertive. Not assertive, imperative. Imperative means what? Command या request. To whom I am giving command or request. I am giving command means open the door. My example is open the door. बराबर, right? तो open the door. This is I am giving order. Now I am giving order, open the door. Now I will tell. In request, how I will tell? Request I will tell, please open the door. So what is this imperative? उसमें क्या आता है कि जिसको हम रिक्वेस्ट करते हैं या हम उसको ऑर्डर करते हैं उसे बोला जाता है imperative sentence. So this is my imperative. My last one is exclamatory sentence. Do you know what is exclamatory sentence? In exclamatory sentence, the feeling which is coming out from your mind or feeling from your body means your uncle has expired. So this is the example is alas, my uncle is dead. Alas, my uncle is dead. So the feeling, this feeling, it has come from your mind that alas means you are very sad. आप बहुत दुखी हो गए कि आपके अंकल एक्सपायर हो गए, तो उसके लिए आप बहुत दुखी हो गए. तो वो फीलिंग आपके कहाँ से आया? अंदर से आया. So that is called exclamatory sentence. And here in exclamatory sentence this mark always comes. Now thank you very much.